हाँ बस सीधे चले आइए यार माल भी Ladies and gentlemen, esteemed guests, scholars, and participants, welcome to the second day of International Interdisciplinary and Multilingual Conference on Girmitiya Descendants, Past, Present, and Future. I am Anshika Agarwal, Research Scholar from the Department of English and Modern European Languages, University of Lucknow, and it is my pleasure to guide you through the session today. We are honored to have you all here as we delve into the rich tapestry of the Girmitiya experience. Before we proceed further, I would like to express our deepest gratitude on behalf of the Center of Indian Diaspora and Cultural Studies and the Department of English and Modern European Languages to our sponsor, the Indian Council for Social Science Research, for their unwavering support and collaboration in making this event possible. As we commence our deliberations, it is an honor to introduce our distinguished guests who have graciously joined us today. Please join me in extending a warm welcome to our chair, Professor Vimlesh Kanti Varma, and other plenary speakers for the session, Professor Gauri Shankar Jha, former head of the Department of English at Ranchi University, Vidya Gangadeen, Rajneshwar Diolal, Suniti Maharaj, Dr. Indrani Ramprasad, and Dr. Rakesh Pandey, editor of Pravasi Samsar. As we commence today's plenary session, we are honored to have a venerable intellectual to steer our discourse. Please join me in extending a warm welcome to Professor Gauri Shankar Jha. His profound expertise will assuredly enrich our understanding of the thought-provoking topic, diasporic space as a sick garden of Eden, evolution, continuation, and culmination. Without further ado, let's welcome Professor Jha to the dais where he'll share his insights and perspectives on this compelling subject. Very good morning to all the dignitaries, respected chairperson in the August House. I am going to present a paper titled Diasporic Space, a basic unit of Garden of Eden, Evolution, Continuation and Culmination, with a special reference to Indian diasporic writing. Now whatever I am going to present, most of the things are known to you, but my observation has something new, or if there is anything that you feel objectionable, you may correct me. Here are scholars. Now,
Diasporic space is something that we have created, whether voluntarily or involuntarily. Now, if you go by the history of diaspora, most of the things have been made clear yesterday by so many speakers. But what we have to see, what we have to observe, is that what happens to the diasporic mass, the diasporic entity, while leaving their homeland, leaving their motherland, and settling in an alien land with a mind to acquire something. This acquire, when I say, this may be in the field of economy, in the field of knowledge, in the field of wisdom, in the field of anything that is not available in the motherland. So diasporic spaces have been created voluntarily in its initial phase, and it is invariably with an aim not only to strengthen economically, rather to acquire and realize the unfulfilled and untranslated dreams of the migrated mass. Be it the field of education, business, or anything else that is not available in our motherland. Yet we are unable to accept the fact that man remains the same in all possible stances. Whenever we are leaving our motherland, we move with our dream. The dream may be of anything, but we remain the same even after crossing the seven seas. As Horace says, men do not change their souls by merely crossing the sea. So what happens is that you settle there, the diasporic mass settle there, and it is something else whether they are going to realize their dream or not. But by and by, the dream land started dwindling, and there crept in nostalgia from the lost land of the earlier life, loneliness of missing taste of room, anxiety to discover the exact pattern of belongingness, apprehensions of the identity being saved and reshaped in the fresh milieu, and above all, the misgivings of one's hope. So, what we gather here is that the problem erupts when we think, when the mind of the diaspora goes to think of their identity. And this identity is correlated with this sense of belongingness, this sense of root, this sense of nostalgia, this sense of home, and all these things. All these things are correlated. It is not that we have to discuss this identity in a separate chapter. So identity is something that is shaped and reshaped every moment. You see, recently there was something that happened on 22nd January in our country. Now that also reshaped our identity. That also reshaped the identity of the diaspora mass also, to the mass of the world also. So that is the thing. And when we talk of diaspora, when you go to the history, you will find that in the 16th century, you have this movement of the diasporic mass, and the reason was socio-cultural compulsions and the abiding temptation of better economy. That is the thing that compelled us to leave our motherland, leave our homeland, and we spread across the world in different countries of the world. So in the 16th century, there is trace of this diaspora mass in Central Asia and Arabia. Thereafter, you have in 17th century, in 18th century, and in 19th, and when we are in the 21st century, the definition of diaspora is changed altogether. Because there is no question of voluntary or involuntary, because we move to the distant land with one aspiration to gain something, especially in the field of knowledge and wisdom, and to add to that for some business purposes also. Now, when you come to
the field of literature, I am going to concentrate on Indian diasporic literature. So in 18th century, if we trace the history, while tracing the genesis of Indian diasporic writing, we find it as old as the tenets of diaspora. The first author where we stumble upon is Deen Muhammad, who was born in Patna, who migrated to Ireland, then to England in 1784. And we have a book, The Travels of Deen Muhammad, that was published in 1794. So, this is the first book that we are having when we talk of Indian diasporic writing. And then, it is not that the things were written only in English. In Hindi literature, we have a huge list of Hindi books that we came to know yesterday also when Professor Dixit was delivering lecture. Abhimanyu, Anant, Lal Pasina, Tota Ram Sandhya, Dhut, Lekin, Prit Vilas, Chalo Jahaji, Joined Pillai's Prey, Adhura Sapna, and so many things are there. So the first thing that we come here to notice the diasporic community in the mental makeup is that of identity. Identity crisis tops all other complications which troubles this alien population at this and this is directly related to cultural identity and cultural assimilation. So the first thing that we come across, the first problem that we come across, the first complication, the first problem, the first trouble is that of cultural assimilation. And so we find in the writings of Indian diasporic writers that there is cultural confrontation, cultural conflict, and we fail to compromise, and that brings so many problems. And then we are trying to investigate whether our root, whether our culture, whether our rituals, whether our festival, whether our human behavior, these things are going to compromise with the alien, that of the alien land. So this identity formation, as I told you, that identity formation is something that is the first thing, and I told you that there is this identity formation is something that comes as a force that is being saved and reshaped every day. Now there is a very interesting interview of Gitanjali Sri while after this the episode of 22nd January. She has written, she has spoken to one interview. I quote, I had in mind an existence, a state of being which is beyond the barriers of belonging and not belonging, of us and them. Rejecting and fixed singular identity or belonging, this state of being comprises an indefinite fluid, hopefully growing multiplicity and identities and belongings. So this Gitanjali Sri tells us that this belongingness, when we are going to define this belongingness, or we are going to define identity, this is not going to be a fixed identity, it keeps on changing. But in the case of diaspora, this identity becomes a very, very crucial problem. And for this, just to prove my point, I have taken two writers. One is V.S. Naipaul, another is Jhumpa Lahiri. Now, regarding V.S. Naipaul, it is said that he is permanent nomad. Permanent nomad. And V.S. Naipaul is a classic example of permanent nomad whose identity appears to be vested in a condition of homelessness. You see, this identity is related to whom also. This identity is related to root also.
this identity is related to our belongingness also. So everything happens here. Everything happens here. We can accept the citizenship or the lifestyle of some other country, but it is not comfortable to be there. Now there is one work, there is one novel by S. Naipaul, and the title of the novel is Half a Life. Now this in Half a Life, the hero of this novel, Willy Chandra, keeps on hovering in between India and England just to save his identity, just to construct his identity, just to know what he has to do. Now, the world of literature, as a student of literature, I must say that the world of literature tells us only two things. They want to answer only two questions. Who am I and what is my role? Two questions are there. Now, so Billy Chandra is unable to define, he is unable to detect where he is and what is his role, whether he should satisfy his urge of the homeland or whether he should compromise with this strange land that, that is there. So, Half a Life tells you the story of Willy Chandra, and this Willy Chandra is somehow like V.S. Naipaul. V.S. Naipaul. Now, what happens is that while trying to identify oneself, while trying to fix the identity, one has to discover and rediscover himself. He has to discover and rediscover himself, and then he finds that he is nowhere. This in this novel, the protagonist says, "But now the best part of my life is gone, and I have done nothing." So, something like the poem of Robert Frost, "The Road Not Taken." The road not taken. So something like that, the hero cannot decide what he has to do, and so he fails to justify his station in that strange land. Now, the question of belongingness is also there, and it is there in his novel, The Enigma of Arrival, in his novel, Away in the World. It is something like one character is there in the play, The Hairy Ape, written by O'Neill. The protagonist, Young, he cannot decide what he is, and finally, he has to meet his death out of his out of no reason at all. Now, the third thing that strikes the mind of diaspora is about home. Is about home. Where does he belong? And here we have his very famous novel, A House for Mr. Biswas. Now, this home is not only a symbol of identity, it is a symbol of something that gives you final birth of settlement, final birth of settlement. And here it is here that V.S. Naipaul fails to, V.S. Naipaul establishes that the need of a house is very important because a house is a symbol, it stands for independence and identity, shelter and permanence, togetherness and bliss. Homelessness is a social compulsion, economic manifestation, and individual aberration. So this is how this Biswas, Mr. Biswas, is there entrapped in his feeling about home. And it is here that a bend in the river, in this novel, the novelist V.S. Naipaul tells you the world is what it is. Man who are nothing have no place in it. What is this nothing after all? How this nothing and something is being defined?
So it is here that B.S. Naipaul is somehow obscure. And this B.S. Naipaul, who is supposed to be a homeless cosmopolitan, wants to highlight the problem of identity, the problem of belongingness, the problem of hope, the problem of root, all these problems that is felt by the diaspora mass. Now, the second novelist that I have taken note of is Jhumpa Lahiri, and her, her first book, Interpreter of Melodies, that is a collection of short stories, where she has taken the theme of the same diaspora experience. She tells us that identity, home, root, and belongingness is something that has to be earned. It is not something that is bestowed to you or bestowed to someone. In the story itself, Interpreter of Melodies, there is a story of Mr. and Mrs. Das. Now they are born and brought up in some other country, and you see the dilemma in their mind. When they come to India, they are attracted towards the Indian food, that is jhalmuri and pakoda. But wherever they move with the bottle of pure water, they move with the bottle of packed mango juice and all those things just to protect themselves from infection. So they cannot decide where to stay, what to do. So their ability of hesitation and withdrawal. This is a sort of hesitation and withdrawal that is noticeable here. In our another story, Mrs. Sen, there is one story, Mrs. Sen, and in this story, Mrs. Sen, the protagonist, she says that everything is in India. She does not compromise with the strange land, and it happens in her other stories also. The same thing happens in her first novel, that is The Namesake, and the first in our first novel, The Namesake, what happens is that Jhumpa Lahiri brings together the couple who have children who does not compromise with the demands of the strange land, and finally they have to opt for something else. In the same way, if we go to our other stories like Goodness, Nobody's Business, A Choice of Accommodation. So the question of identity, the question of maladjustment, the question of who recurs in all the works. So here we can find that both B.S. Naipaul and Jhumpa Lahiri hover around the same immigration perception. Now another very important novelist is Amitabh Ghosh, and his two novels, The Glass Palace and The Sea of Poppies, that is directly related to the problem of the indentured laborers, the diaspora mass. So what happens is that repeatedly we find that in almost all the Indian diasporic writings, this sort of feeling that tortures them is that of identity, that of root, that of hope, that of belongingness, and this conflict is noticeable at different levels. That may be cultural, that may be social, that may be psychological, that may be religious. As a consequence, diasporic space, which was supposed to be the Garden of Eden, appeared sick and
the dream land settle. Thank you. Thank you, sir, for your insights on the subject matter. Dear audience, we are delighted to invite you to engage directly with our distinguished panelists, Vidya, Gangadeen, Rajneshwar Lal, and Suniti Maharaj. Your questions, thoughts, and insights are highly valued, and we encourage you to participate actively in this interactive session. नमस्कार, आप सबका स्वागत है। निवेदन है, समय की सीमा के कारण जो वक्ता है 10 मिनट में अपना वक्तव्य पूरा कर दें, जिससे कि वो समुचित समय मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। Namaste all, my name is Vidya Gangadeen. My involvement with this project stemmed from my first visit to India in 2015. I had a very strong connection to the land of my ancestors. It was from there I decided that I wanted to trace my ancestry. I managed to acquire the immigration documents of my ancestors from the Trinidad and Tobago archives, which helped me to learn about my family's history. Like many Indians, my ancestors' journey to Trinidad was not a simple one. From the village of Tarawan in Jaunpur district, Uttar Pradesh, India, a young couple embarked on a transformative journey in 1901. Gangadeen, a 27-year-old man from the Hill middle farming caste, and his 23-year-old wife, Monturani, registered at the Boxer sub-depot on July 19, 1901. Alongside them was Desrania, a 23-year-old woman of the Rajput caste from the Raghunathpur in the Shahabad district, Bihar. After registration, the trio traveled to Calcutta, where they underwent medical examination and consent to emigrate. On August 20th, 1901, they boarded the Birawa, the first steamship carrying indentured Indians to Trinidad. Ultimately arriving on October the 17th, 1901, their stories reflect the poignant narratives of individuals who embarked on the historic indentured journey from India to Trinidad. Upon their arrival at the Trinidad Nelson Island Immigration Depot, Gangadeen and Desrania were selected to work at the Orange Grove Estate as indentured laborers. Sadly, Monturani did not survive the journey. Our family records state that Gangadeen later married Desrani and had a son named Sukrat Gangadeen, my grandfather. Sukrat's son, my father, Sanilal Gangadeen, went on to marry my mother, Rose Gangadeen. My
My mother's father came directly from India. My grandfather, Hajari, hailing from the village of Hinrapatu in the district of Damoh, Madhya Pradesh. India embarked on a significant journey at the age of 22. He belonged to the learned Brahmin caste, with his father being Puran and his wife, Parvati, remained in the village. On August 29, 1902, Hajari registered at the Nagpur sub-depot. He underwent medical examination in Calcutta and consented to emigrate. Boarded the Avon sailing ship on September 1st, 1902. He set sail for Trinidad, arriving on January 12th, 1903. Hajari was then selected to work on the Camden estate in central Trinidad. He then married my grandmother, Juki Ramratan, and had my mother, Rosie. In the late 1960s, my father made the decision to emigrate to the UK, and eventually, as a family, we joined him. Whilst I have many fond memories of growing up in Trinidad, I spent most of my formative years growing up in the 1970s, London. I still reside in London today with my 3 children and 3 grandchildren. I've had a wonderful and full life, but I've always longed to visit my ancestral homeland. After researching my family history, I felt compelled to visit the village of my ancestors in 2023. But unfortunately, I did not feel a connection to the villagers living there. I'm hoping to continue my search and learn more about my family's history. I've got a draft of resolution tabled by Dr. Satish Rai, Dr. Shahjahan Harinandan Singh, Aslam Khan, and Dennis Ramadan, Ajay Chhabra, Krish Maharaj, Suniti Maharaj, Vidya Gangadine. I'd like to read this to you. The Congress of the Center of Indian Diaspora and Cultural Studies, in association with the Department of English and Northern European Languages, University of Lucknow, the Indian Council for Social Science Research, and the Global Girmitiya Association, together on the 31st of the 1st, 2024, to 1st of the 2nd, 2024. Express deep appreciation for hosting this on the subject of Girmitiya descendants, with as a central theme, past, present, and future, by the participants of several countries and India. And the Congress results the following. Operative clauses. Observing the presentation by the speakers as well as the inspiring debates during the seminar based on the central subject and the sub-themes concerning the indenture system by the British colonial regime in India. 2. Establish the indenture system to replace slavery and the slave trade globally, whereby the forbidden slavery temporarily restricted freedom under appalling conditions with meager wages and poor nutrition, and held care by more than 1.2 million British Indians under restrictions were transported to the colonies. With a disturbing statement that also in the post-slavery colonial past, in the form of the indentured system, as compensation for the abolition of African human trafficking and disguised form of slavery, gross forms of crime against the Indians continues. Deeply regrets that the impact of the indentured system continues to affect the socio-cultural development, equal treatment, slavery, colonial past. He considers recognition of the indentured system as a crime against humanity, referring to the World Conference Against Racism held in Durban
from the 31st of August to the 8th of September 2001 against racism, racial discrimination, xenophobia, and related intolerance were the Article 13, the 33, whereby Indian subjects were transported in slave-like conditions and their labor cruelly extracted for the benefit of the European colonies. The Indian indenture system of human trafficking is a crime against humanity, and to take appropriate steps to submit this declaration for acceptance to the Human Rights Commission, the United Nations, and the European Union. Submit for ratification by the responsible countries with a colonial past. Persuade these countries to offer. Ladies and gentlemen, now we embark on our next plenary session with Dr. Indrani Ramprasad. Would you like to आप सभी को मेरा सादर सा नमस्ते। मेरा नाम राज है और हमारे अमृता ये सब मैं इसलिए ज़्यादा करके बोल रहा हूँ क्योंकि ये हाईलाइट करना चाहता हूँ, थोड़ा अंग्रेजी बीच में आ जाएगा, क्योंकि हमारे जो पिताजी और आजा जी और जो भी हमारे साथ संदीप जी हैं, उन्होंने बहुत परिश्रम करके हमें ये भाषा और हमारी कल्चर को मेंटेन किया हुआ, और ये तो उनको बड़प्पन है कि जो कुछ भी आज मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे, टूटा फूटा जो भी है उनके कारण से। तो विलेज बोलते हैं ना, आजमगढ़ से गया था इन द ईयर 1904, तो 17 साल का था वो, और ये मेरा पहला ट्रिप है यहाँ इंडिया में। तो जो जैसे कि विद्या जी ने कहा, जो हमारा आपको तो हिस्ट्री मालूम हो गया होगा कि हमारे साथ क्या बीता, तो आई एम नॉट गोना गो इनटू दैट इफ दैट्स ओके। I'd rather speak about मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। तो प्रोफेसर जी, आपने जैसे कहा था कि who am I, आपने अपना स्पीच में मेंशन किया। मेरे लिए ये जो ट्रिप है, to a great extent it is a somewhat of a spiritual journey as well। जैसे कि हमारा 16 संस्कार में जो नामकरण संस्कार भी है, who am I, को हम, I'm here on a spiritual journey as well to find out who am I, and the only way I can find out is by connecting to Bharat, Mother India, and where my ancestors came from. So जैसे कि मैंने कहा, थोड़ा spiritual journey, I hope it's making sense। थोड़ा मुश्किल एक्सप्लेन करने में कि what I'm trying to say, but मेरा इंटेंशन तो वही है। तो एक बार फिर I mean I really thank जी और सतीश जी जिसने मुझे हेल्प किया यहाँ आने में। यहाँ पे छोटी सी एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे कि मैंने कहा कि मेरा पहला ट्रिप है। बहुत सालों से मैं यहाँ आने का सोच रहा था, लेकिन जो आइडिया, जो इम्प्रेशन, जो थॉट्स हमारे में क्रिएट किया गया कि भैया तुम्हें मुश्किल है, यहाँ जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो है। I was totally lost. I would really love, thank you Satish ji for helping me get here. It is a huge thing. I would like to see आप लोग help me कि सतीश जी की तरह उसको support कीजिए, because we need people who can help people like me to come here and connect, because all confusion एक कुछ समझ में नहीं आता। So once again, thank you so much. कुछ issues जो मुझे दिख रहा है, और इसको भी अगर कोई उपाय से अगर highlight कर सके,
रिकॉर्ड कीपिंग मेरे ख्याल से बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। अगर यूपी गवर्नमेंट पीजी गवर्नमेंट के साथ मिल के अगर कुछ रिकॉर्ड कीपिंग अपडेट प्रोबली डिजिटाइज कर दे, इसमें ढूंढने के लिए आसान रहेगा। एक दूसरा प्रॉब्लम जो मुझे दिखा, जहाँ तक मैं देख सकता हूँ, कि बिकॉज ऑफ दिस रिकॉर्ड कीपिंग जो जो बराबर नहीं है, ये जो न्यू जनरेशन आर लूजिंग हाउ टू कैरी ऑन फाइंडिंग कि करे तो करे क्या, गिव अप कर देते कि भैया बहुत मुश्किल था, मैं कहाँ जाए, किसे पूछे। सो आई वुड रियली एनकरेज, अगर कोई भी किसी भी तरह से अगर मैसेज यूपी गवर्नमेंट या इंडिया सरकार को पहुंचा सके कि थोड़ा हमें सहायता दीजिएगा। जैसे कि मैंने कहा, सतीश जी इतना बड़ा कार्य कर रहा है, लेकिन जो काम मुश्किल होता है उसमें सपोर्ट करने वाले भी कम होते हैं। इट्स अ गिवन। सो प्लीज try and help us. Future में मैं क्या देखना चाहता हूँ, because the theme of this whole conference is past, present, and future. Ideally, I would love to see कि और कुछ पुस्तक वगैरह लिखा जाए, कुछ बढ़िया मूवीज बने, maybe even to the extent of Bollywood standard, और एक भवन का यहाँ पे स्थापना किया जाए कि चाहे फिजी से हो, सुरीनाम, ट्रिनिडाद, गाना, जहाँ से भी पीपल आए तो उनको लगे, एश्योरेंस मिले कि भैया हाँ हमारे इंडियंस यहाँ पे है जो हमें सपोर्ट कर सके, हमें दिक्कत नहीं देगा, चलो हमारा फैमिली अभी भी वहाँ है। तो हर एक अभी एनीबॉडी इन यूपी आई वुड रिगार्ड एज अ फैमिली मेंबर। तो इन शब्दों के साथ थैंक यू सो मच। बहुत ज़्यादा Thank you, sir, for your valuable words. I now request Suniti Maharaj ma'am to grace this occasion with her insights. Namaste. My name is Girmitiya Maharaj. I am from the village of Princestown in Trinidad. My great grandfather was from the village of Adipur in Uttar Pradesh. He left on the voyage on 1857 on the Brenda to Trinidad. He was put on the Malditu estate. My Karaji was from Faizabad. She left when she was 8 years old with her mom and her brother. She got married to my great-grandfather at the age of 13. Her mom and her dad came back. She left alone in Trinidad, married to my great-grandfather. She was left alone. So I decided to trace the both of them. My great-grandfather, Devunarayan, I found his immigration pass, and Satish helped me find him. That is where the trouble starts. Try to get information, it's very hard getting information or getting anyone in India to help you. Everybody out, it's a business. They take money from you, they don't help you. I came here, I got robbed. The people that were supposed to help me took me to the village, they charged me for the program in the village. They charged me for the staying in the village. It's all about the money. I used a lot of money in trying to find my great-grandfather, which I think is really, really bad because we are emotionally attached to these people. These are my family. I got the immigration pass. Satish was very helpful in making me get to the village, get in contact with the people. But from the minute I came here, these people that say they have foundations and supposed to be not taking money, they charge you for every single thing. Exorbitant prices. You don't know how much we lose by trying to find our relatives.
Vidya Ji, that is how I got to know Vidya Ji. She would have been the next victim. The person went on to say that, you know, they found my relatives when they didn't, and they were charging Vidya Ji, same amount they were charging me. Fortunately, I and Vidya got in touch because they gave Vidya my number, and then we realized that, you know, it's all a scam. And that is how I put her on this issue helping us. But I think the UP government or somebody in India needs to stop these people, because I am about victim number 9. That is why I think this forum is nice to let you all know that, yes, we have interest. We have a lot of interest in coming here, finding our people, relating to them, spending time here. But if every time somebody makes an attempt, you get robbed, you lose the interest. We spend a lot of money to get an immigration pass, costs a lot of money. To try to find relatives costs a lot of money. To send people to search costs a lot of money. And then, you know, when you get here, you're being robbed again. I think we should all have everything digitalized, 1. And 2 is that make the experience of our diaspora, make us feel like we are welcome, like we belong here. We feel like we are outsiders because we can't speak the language, 1, which we lost due to no fault of our own. 2, when you come here, don't speak the language, they're not welcoming in the sense that, okay, you come, you're an Indian. I consider myself an Indian. Yes, I was born in Trinidad, but I consider myself. And when you come here, you don't get the acceptance because you're 3-4 generations down. To me, they look at people from the diaspora as a money-making project. It shouldn't be a money-making project. We lost our roots. We're trying to find our roots. And these people need to be stopped. And that is why I thought the university here would have helped us, or at least try to help us get everything digitalized, so we wouldn't have the middleman that is trying to rob people from the diaspora. I know I went off track on what I'm supposed to be saying, but this is my question. I did find my relatives eventually, which I'm really happy for. I went and met them. I keep in touch with them. Etc. Now I'm on the journey of finding my Karachi, who left when she was 8 years. She never get to come back. When she was 8, I never ever getting to come home again. So I'm on the journey of going to Hyderabad, so she helped me. I could find the people that remained here because she left her brother and her mom here. And she always wanted to come back. Never got the opportunity to, so I'm trying to see if I could find her and connect with her. So my story is a kind of sad story. But I'm not going to give up. I'm going to try to see in what ways Satish and our little group, what we can do to get not only the Lucknow University, but the government of Uttar Pradesh to get these people that is trying to scam people from the diaspora. So with that said, I hope that you all could help us in any way. Anybody from Uttar Pradesh that could help us, get to the right people to get our stuff digitalized, reconnect, and not get robbed. Thank you, Puniti Maharaj ji. We really appreciate your emotions and your anguish at the same time. The government of Uttar Pradesh has a project, Know Your Roots. I personally met Mukesh Kumar Mishra, Additional Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh.
and he showed his great interest to meet you because of this Ram Mandir, Prime Pratishtha and other activities. They might not spare time, but I, on behalf of Indian citizens, can assure you on behalf of University of Lucknow and on my personal behalf that we are here to support you in all the ways. And some PhD, not only PhD is going on under my supervision, but we also propose to establish Global Girmitiya Research Center, and that center will certainly, with the help of Global Girmitiya Association of Australia and England, US, we shall support. Regarding Vidya Ganga, the story is very interesting, and I personally sent my student to that village. I talked to the village chief and we inquired so many informations about you. Since there is no official record before 1947 in the government archive, still government also shows interest, and I am sure that in future, here I am talking about Delhi. So there may be few persons, but once you just have a connectivity with any institution, basically academic and research institution, I'm sure that in future nobody will be deceived, and the image which you had about India and about Indians, that shall be certainly improved and rectified. Next, may I call Indranee Ram Prasad ma'am? Yes. We have shortness of time. You know, your emotional bonding with India is very rich and very profound. And we also appreciate it, acknowledge it, and we also support you in all the ways wherever possible. Thank you. In the tradition of my ancestors, I say Ram Ram, Sita Ram. Baad mein namaste aaya, pranam baad mein aaya. But our ancestors said Ram Ram, Sita Ram. My first connections with India was like 1973, before those in the back, before you were born. I came to study Dharma at Banaras Hindu University, but no such course existed. So I ended up doing little Indian philosophy, geography, and so on. And all my higher studies have been done in India, even though I'm both Trinidadian and an American citizen. I chose to study in India. My bachelor's, my master's, my PhD. And I also joined the first Master's in Hindu Studies course in the whole of India. I am the only international student that just graduated from Banaras Hindu University. And I like telling them, I'm the oldest here. I'm older than even the Vice Chancellor. So I keep my grades, and they treat me very well. So for me, India is a source of intellectual, wealth. When I first came to India, I was like 19, 20 years old. And I'd look at the railway station and say, oh my God, this coolie is probably related to me. Because we were also called coolies. And I would see them all and look at their faces and say, we don't know. And why should I know? They are Indian. And as Vidya said, we call ourselves India.
We don't have the regional differences as you have here. And I want to mention also the Tamil, while we're talking about India. I've done on my YouTube, I have an interview with a woman of Tamil origin. And she was able to say the village and you know, the fine details of where she came from. So in our diaspora, we have a mixture. We have the first diaspora that went out. I speak of indentured Indian diaspora when I focus on the diaspora. We have the first level. And today we have second, I'm also second, because I've got to America to live. And I'm also homeland because I'm back in India. And I'm studying in India. So I carry a mix of what's in my head and where my Atman is located. And I always say my passport and my Vageda belongs to Trinidad and America, but my Atman is Bharatiya. It is here. And that is what Vidya and they are pointing to. That is the emotional connection we have. Anyway, let me jump straight into my paper. I want to suggest what my recommendations first and before I go into the detail. We need a needs assessment of the diaspora at the different levels. The first level diaspora, second and third. What do we need? And I speak of the indentured Indian diaspora because we are different to the you know, the rich elite Indians from Delhi that go to America, Los Angeles, and so on. We are different. We need a needs analysis, and I always complain about this. Do we need Hindi? My ancestors didn't speak Hindi. There was no Hindi when we went in the diaspora. 1838, 1845, there was no Hindi. Our songs and music and everything there is in Hindustani, a mixture. But India is not teaching us that. And we are losing those songs because we don't understand what we are singing. We just have the tune, the melody. So we need India to teach those languages. Tamil is very popular amongst the Kalmai worshippers in Guyana and in Trinidad with their songs. They need a kind of language, not very academic. Yeah, when you reach that level, then you come here for academic, but we need introduction to studying these languages to keep your culture alive. That's my suggestion. And I also ask, India, High Commission, you send classical dance and classical music, but I need to build on my cultural baggage that I brought. The Sohar and all these things that our people sing, you know, what about those? You don't come to teach us that. You're imposing the whole Sanskritization process. You're imposing an elite culture on this indentured diaspora. We need both. I'm not saying no to one, but I need to be located in my indigenous kind of culture first. Then I will learn Bharatanatyam and so on later. We need to use the Indian embassies as soft power centers. Now, we need to use that soft power. I remember a couple of years ago telling one High Commission in Trinidad, so, you know, we had a little meeting with some leaders in the community. You want to teach Hindi? Look, where's the interest in Hindi? Maybe we will hear one or two Bollywood songs, but what kind of Hindi is that? I'm telling you, we need you to teach us Ramcharit Manas and bring your Hindi in through Ramcharit Manas. And then they said, no, we are India, we are secular, so you can't teach me Ramcharit Manas. And that's the way you would have brought your Hindi to the entire community. But India, you know, was lost in its Marxist ideology and the ideology of Reconstruction from the very beginning of independence. We thought it was a lot of idealism, many good ideas, and in my paper here I talked about that you laid there at the first was aligned with violence. The Marxism was aligned with violence that could never bring lasting peace to us.
And I'm saying this, forgive me if I hurt anybody, because I know we are still very much controlling academia in India and America. It is the left Islamic nexus that rules. I can see that as an outsider, okay? I'm not an Indian. In that way, political passport and so on. So idealism is a challenge young people face. As we are young, we want that everybody must have and we must be happy. India has taught us how to live in the beauty of duality. Our philosophy went all the way back. Pain and suffering, how do you overcome all of that? It's coming to terms with learning with duality. It's never going to be the same. And later on in my paper, I refer to the works of Caribbean writers like Frantz Fanon, Césaire, and so on, and how they too tried that kind of left ideology, that left violence in our midst. I did a short analysis here, which I won't go into, about what do we need, our formal and informal institutions for propagating Dharma. And I don't, let me be very clear, having come out of BHP right now and having studied Hindu Dharma a little more detail, I do not say Hindu as religion. It's the civilization that marks us who and what we are. I can be an atheist and still be a good Hindu. But we need formal institutions for propagating Dharma. And I saw this in Fiji. You know, the Fiji has nice competitions with all their little communities for Ramchakranas, and that keeps them alive. The sanskaras, the role and function of the mandir and other institutions. We need to be looking at this, and India has to stop saying we are secular. Hello, we are your children too. The colonized Hindu, Indian, African, in the Caribbean and India. We have talked about Derek Walcott. He explores post-colonial Caribbean identity in his literary works. He was triracial. English ancestry, Dutch ancestry, and African ancestry. And I always miss the opportunity for a photograph with him. I was once alongside him and said, why didn't I take a photograph? He's such a great guy in terms of his intellectual thing. And he had written once about Ramlila. When he got his Nobel Prize, his entire speech is predicated on the Ramlila. On the Ramlila as a form of remaking a new identity. So I won't go into details, but basically he said it's like a broken pot. The pot is broken, and we are putting it back together. And where the cracks are, you know, that's an old Japanese style. Where the cracks are, they are putting the gold glue light to glue it back together. And he said, when you put that together, it's much more love in that culture than if we had brought it wholesale from another country. And that's what he's talking about, a remaking. And while many people lament our loss, he talks of a remaking of a new culture and a new civilization that they call Caribbean, which is still very controversial for us, because the Creole concept means you cannot be either pure Indian or pure on the other end European. You have to be a mix of it in between. And Indians, we still want the freedom to be what we want to be. We don't want anybody else to tell us how we should dress and behave and so on. You know, so those conflicts are still there. So I'll just skip that. And Naipaul, I love Naipaul. I loved Naipaul as a kid because I thought he was writing so honestly, so honestly. You know, a little bit of story I had here. His grandfather was an indentured Indian laborer, bonded. Means he was bonded to the plantation owner, and the sardar, or the head man of where he was working, paid off his bond and married him to his daughter because he was a Brahmin. Kapale was a Brahmin.
So he said the opportunity to get a good Brahmin to marry his daughter, though they were Presbyterian Christians. And they got married, and she didn't like his her name was Sugi. She never liked his Kalimai worshipping and anything that was Hindu in the family. However, Mr. Kapale became unfaithful as a little disease we have in the Caribbean. He became unfaithful to his wife. And then she became a Kalimai worshipper so that she could access the supernatural powers to hold her husband back to her. Very interesting blend of the culture. And much has been written, as I said, about the business of religion and tradition in colonial and post-colonial studies. How they go together, how they don't go together. Fanon, for example, was against both of them. Others say it would break up the nationalism. And this is the India's kind of earlier positioning. And we have been complaining about, for example, the reparation. And I always asked about the reparation because our culture did not teach us to be crying over spilt milk. We picked up, you get, what we say, you get mangoes that are not good, you make achar with the mango. You make something out of it. And so these people made their lives on a strength that is above any other ethnic group in the Caribbean. The Indian ethnicity, the Indian and the Hindu identity. However, I think our academics have failed us in that respect. The whole diaspora studies thing started really in the Caribbean, as far as I know. More of the things started there. But they remain at a level of reporting and literary, and they didn't talk about reparation, get on board with the worldly movement. So I'm very pleased to say that I agree now, having understood it more and the reason for it. Now, at the lower level, people will tell you what bother with that. The intellectuals, academics must drive that to say yes to reparations for us. And that kind of identity, what you have done, kind of undo it. Okay, I know time is up. I want to jump here. Right, can I just show my photo? I will end with Sivra Sadhu. Most of you know Sivra Sadhu's story. Don't know it. Sivra Sadhu was born in 1904. He passed away in 1970. He built the first kutia. We call it kutia. Siwala. Now we say mandir. We said kutia, siwala. He built that on land that belonged to the estate in the 1930s. That was the old kutia that he built. But before that, it was built on the land, on the bank of the sea, and the British told him he couldn't build that on their land. And they told him, and he went to court. What I admired about this man, he went to court in those days. He failed, but he went to court. Passive resistance, he did what he had to do using the law, like Gandhi did. And he lost, and he says, okay, well, the land belongs to you, but the sea doesn't belong to you. Well, he didn't know maritime law then, eh? Maritime law, whatever, the sea to us. So he started building that temple out of the sea. This man had a bicycle, and on the two sides of the bicycle, he had buckets. He would take the bucket of sand and whatever else he had to build, and he would ride. It was a long ride. I know the village. It was a long ride, and he would go bucket by bucket by bucket. I mean, who else built a sea like that we know, bucket by bucket to Sri Lanka? The man is bucket by bucket on his little bike, and he built the pathway. And that Monday was built, adobe of dirt. It lasted very long. It kind of hurt our hearts when politicians get involved. That's another thing, Trinidadians, our culture, religion, and politics together.
You couldn't move forward without the politics. Strange, you know, but Hindus invested all their energies in the political regime. That's because to get ahead, you had the head of the political party and the head of the Sanatana Dharma was the same person. And to move your Hindu identity forward and to build schools and so on, you had to get the government permission. So when you married the two, it was forced in those days. You had to have permission and align with the government. So that nexus was there. So eventually this temple was rebuilt by politicians. Can we go to the next one? This one. This is a temple rebuilt out in the sea. But there's a couple of politicians that got together and they built it out of concrete and like I see in India now, tiles and so on on the floor. And the aesthetics is so not in harmony with Hindu aesthetics. So not in harmony. So that's what we have now. It still doesn't carry the soul of sadhu. Okay, so this is, we call this the second temple in the sea. It's not the first. Let's go to the little one with the blue. Yeah, this is a remnant of the top of the first temple that was out in the sea. First. And inside there is a Shiva, because it's Siwala. It was previously a Siwala. So they kept a little piece of the old in that new building that you saw. And go to the last one with yeah, that's a Hindu Seva Sangh, an organization in Trinidad, built this monument to see that sadhu. See him with his little dhoti and so on. He came on the ship, so he was our not first generation, he was Indian, British Indian. And I keep, I keep reminding people, we were British Indians. 1838, 1845, when we went, we were Britishers. There was no India. So we were British Indians, and they have kept this in honor of that man. Okay, I need to jump. And he came several times to India. Besides doing that, and working on the estate, he started a little shop, a convenience store, buying and selling, and it made him a little wealthy, and he could come to India. He came several times. So I'm in the process now of trying to find his roots from Banaras, because I'm based in Banaras. And that remained like a, when seamen are out in the sea, what you call that? Lighthouse. That temple was like a lighthouse to those out in the sea. And I ended with that, and that place became our Ganga. There, it was also our Ganga. And when we were able to cremate, we cremated there also. So we rebuilt our own civilization in the Caribbean. Thank you very much. Namaste. Thank you, Indrani Ram. The lecture is very thought-provoking, and I humbly request you to visit the department again for your complete lecture and deliberation in future. Because due to shortage of time, I am sure that you rushed very fast. So, because your thoughts are very pertinent first, may I request Vimla ma'am, just for a few words. She is also from Trinidad, and she wants me, please come here on the stage. She was very eager to say something, share something with the audience. Hello, my name is Indrani Ji. I also say Ram, Sita Ram. And I want to say a special thank you to Pandita Indrani. She's my mentor. I happened here accidentally. I posted a photo on Facebook of myself walking with a Banarasi family on Asigat. And I get a response from Indrani, hey, I'm on Asigat.
I said, tell me, where are you? And she tells me about this conference and brings me along. She has such a big heart. And I want to say a special thank you to Indrani for that. But at the same point, next week, she is my mentor. And she's my inspiration for us women to proceed along the academic and dharmic line. I also want to share, when I'm hearing all the ladies, my family has a similar experience. My great-grandfather, my Bandara, Ramanan Pandit by name, came to Trinidad in the 1890s. And being a Brahmin, like she said, his contract was paid off for so that he could be free to service his Jahaji Bhai families. And that he did, and was able to return to India on several journeys. He actually came back and went to the Banaras Hindu University, studied his Sanskrit, went back to Trinidad, 4 journeys, brought his children who were born in Trinidad back to Chaweta village in Ajamgarh. They grew up here for 7 years. The plague came, his wife died, and he took all of them and went back to Trinidad. And that's why I'm 4th generation in Trinidad. तो हिंदी कुछ बोलती हूँ क्योंकि भारत के सरकार के द्वारा मैं दिल्ली में आई थी 1989 में हिंदी सीखने के लिए, इसी से मैं कुछ हिंदी बोल सकती हूँ, लेकिन और भरना हिंदी में जरूरी. So that's the bit I just want to share, but I do happen to have a video of the first meeting when we did a research and we found our family. They are from Chweta, Ajamgarh. And the first meeting of that family, my eldest sister came to meet them. And it's a very touching, moving video that I'd like to share with you. Thank you for this opportunity and your journey. Thank you for sharing your expertise and perspectives with us, ma'am. Ladies and gentlemen, I now invite Dr. Rakesh Pandey to the dais to share his profound insights on the impact of Awadh and Awadhi diaspora on Girmitiya world.
यहाँ पर मेरा जो विषय है उसमें तो सोचकर मैं इस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने आया था, तो मैंने कुछ नाम लिखे हुए थे कि मैं उनके बारे में जानकारी दूंगा। लेकिन जब मैं यहाँ आया और मेरी मुलाकात यहाँ पर मेरे तमाम मित्रों से हुई, तीज भाई से हुई, विद्या जी से हुई, तो मेरे जो पेपर है, जो मुझे बात कहनी है, उसको और बल मिल गया। क्योंकि बात मैं अवध और अवधि डायस्पोरा की करनी है, तो सतीश भाई बलरामपुर से हैं, इनके पूर्वज। विद्या जी मुझको मिली, इनके पूर्वज जौनपुर से निकले। इंद्राणी जी से आज सुबह बात हुई, इनके पूर्वज कानपुर से निकले, कानपुर से हैं। मेरे इस प्रकार तमाम मित्र यहाँ पे जो मिले, 3-4 लोग और मिले हुई, तो लगभग जो है सब, जो मैं बात कहने आ रहा था उस बात को और बल मिल गया कि जो बात मैं सोच कर आया था। तो मित्रों, बात भी समय कम है, बात को विस्तार नहीं दूंगा, ना पेपर पढ़ूंगा, मैं 10-12 मिनट में अपनी बात कहने का प्रयास करूंगा। मैं उपाध्याय जी का भी बहुत विशेष आभारी हूं कि जिनके कारण हम सब लोग मिले, जिनके कारण ये कॉन्फ्रेंस संभव हुई और हम लोग को अपनी बात कहने का अवसर प्राप्त हुआ। मित्रों, बहुत समय तक, जैसे कल से आप यहाँ पर कॉन्फ्रेंस में आप पेपर पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, आप लोगों ने एक बात ही पाई होगी कि बार बार नाम आया कि सब लोग भोजपुरी भाषी थे। कहीं से आपने कल से आज तक ये नहीं सुना उसमें कि अवधि का कहीं नाम आया हो या ये लोग जो है, प्राय एक अवधारणा स्थापित हो गई है कि लोग बिहार से गए थे और भोजपुरी भाषी थे। और इन तमाम देशों में जो एक पुस्तकें भी अभी आदरणीय विमलेश शांति ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है, इन पुस्तकों को जो मैं पलट रहा था, तो जो उन लोगों को लेख हैं, उनकी गलती नहीं मानता हूं, क्योंकि उनको जितना भूगोल का ज्ञान था, आज हमारे भाई जो फिजी से आए, उन्होंने एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने, ये ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, कि चूंकि उन लोगों को भूगोल का ज्ञान नहीं था, अगर किसी ने बगल वाले ने कह दिया कि हम बिहार से हैं, तो लखनऊ का आदमी भी अपने आप को बिहार का ही वहां बताने लग गया। जैसे अभी 6 महीने पहले सूरी नाम से मुझे फोन आया कि प्रतापगढ़ जो है वो बिहार में है, तो उनको बहुत समझाना पड़ा कि प्रतापगढ़ जहां मेरा जन्म स्थान है, उसके बगल का जनपद है, वो बिहार में नहीं है। इस प्रकार की जो तमाम भ्रांतियां, तमाम अवधारणाएं बनी हुई हैं, मुझे लगता है अब समय आ गया है, टेक्नोलॉजी आ गई है, उन पे काम होना चाहिए और इस पे और आगे बात बढ़नी चाहिए। मैंने जो जितना मैं ये अकेले के बल पर कर पाया, मैं उतना मैं कर रहा हूँ। अब बात यह है कि अवधि के जिले कौन से हैं। अवधि के जहाँ पे उत्तर प्रदेश में और बगल नेपाल में और कुछ छत्तीसगढ़ी को और बुंदेलखंडी में भी अवधि का पाया जाता है। तो पहले हम उन जनपदों को जाने कि अवधि किन जनपदों में है और यहाँ से जो लोग गए वो किन जनपदों से थे, तो आपको वह मिलान जो है आप उसको सहज रूप से समझ पाएंगे। प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, रायबरेली, उन्नाव, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अमेठी, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, अयोध्या, अंबेडकर नगर, लखनऊ, सीतापुर, खीरी, बस्ती, ये जहां पर अवधि के जिले हैं। तो कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर कुछ मिश्रित बोली जाती है। शाहजहांपुर, हरदोई, कानपुर, बांदा, मिर्जापुर, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, जौनपुर और नेपाल के 7 जनपद हैं। कंचनपुर, दांग, बांके, गिदरिया, कपिलवस्तु और ये रूपंदेही, नवलपरासी, ये 7 जनपद नेपाल के हैं जो अवधि भाषी हैं। क्योंकि एक बहुत बड़ा गजब संयोग है कि 2 भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए और जो लुम्बिनी में भगवान बुद्ध पैदा हुए, और दोनों ही ये अवधि भाषी क्षेत्र हैं। तो जो अवध संस्कृति बाहर गई, इसमें इस रीजन का, इस जो क्षेत्र है, इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। और लगभग जो अवध के जिले हैं, ऐसे कुछ जिले हैं जहां पर अवध के जो अवध, जो नवाबों का अवध था, जो वर्तमान में अवध क्षेत्र, तो उसमें कई जगह पर जो है अवधि नहीं बोली जाती है। ये भी सत्यता है कि कुछ अवध के जो जिले हैं वहां पर अवधि नहीं है। वो जिले कौन से हैं? लखनऊ, सुल्तान, मतलब ये अवध के जिले हैं, लेकिन इसमें कुछ जिले ऐसे सम्मिलित हैं कि ये पूरा जो अवध क्षेत्र क्या है। अवध क्षेत्र में लखनऊ, सुल्तानपुर, रायबरेली, उन्नाव, कानपुर, भदोही, जैसे भदोही अवधि क्षेत्र नहीं है, यहाँ पर भोजपुरी बोली जाती है।
प्रयागराज, बाराबंकी, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, प्रतापगढ़, बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, हरदोई, लखीमपुर खीरी, कौशाम्बी, सीतापुर, श्रावस्ती, पीलीभीत नहीं, शाहजहांपुर। तो इस प्रकार, और अयोध्या जो है, जो एक समय पर फैजाबाद जो थी वो अवध की राजधानी थी, जो बाद में लखनऊ अवध की राजधानी बनी। ये अवध और अवधि क्षेत्र था जिसके जहां से लोग यहाँ से गए। अब मैं चूंकि जब मैं फिजी गया तो फिजी के जो वहां का राष्ट्रीय अभ्यागार है, मुझे यह सूची करीब 10-12 वर्ष पहले प्राप्त हुई। अब तो बहुत जगह छपी हुई है, एनसाइक्लोपीडिया जो ब्रिजबीलाल जी का उसमें भी प्रकाशित है। अभी मैं देख रहा हूँ बहुत जगह प्रकाशित है। अभी इस पुस्तक में गांधी जी ने जो ली उसमें भी सूची दी हुई है। अब जो 60 लगभग 1916 तक वहां पर 60 में से 15,000 दक्षिण भारतीय गए थे, 45,000 लोग जो है उत्तर भारत से गए थे, जिसमें से 34,000 लोग जो है वो उत्तर प्रदेश और अवध के थे। तो वह सूची जिसमें बिहार से मात्र 4500 लोग गए थे लगभग। तो सूची क्या है, किन जनपदों से, जो मैंने पहले सूची पढ़ी और अब जो सूची पढ़ रहा हूं उसको भी जरा ध्यान दीजिएगा। बस्ती से गए 6,415 लोग, गोंडा से गए 3,579 लोग, फैजाबाद से गए 2,329 लोग, सुल्तानपुर से गए 1,747 लोग, आजमगढ़ से गए 1,716 लोग, गोरखपुर से गए 1,683 लोग, इलाहाबाद से गए 1,218 लोग, जौनपुर से गए 1,188 लोग, शाहाबाद से गए 1,228 लोग, गाजीपुर से गए 1,127 लोग, रायबरेली से गए 1,087 लोग, प्रतापगढ़ से 894 लोग, बाराबंकी से 769 लोग, गया से 765 लोग, बहराइच से 750 लोग, बनारस से 672 लोग, रायपुर से 744 लोग, पटना से 644 लोग, लखनऊ से 613 लोग, कानपुर से 583 लोग, उन्नाव से 556 लोग, आगरा से 549 लोग, मिर्जापुर से 527 लोग, जयपुर से 473 लोग। यह एक अनुमान मिलता है कि किस प्रकार की हमारी जो है यह एक जो लोग हैं उनका प्रतिशत और जिस क्षेत्र से गए। और एक बात आपको बताऊं, जब मैं इस पर काम कर रहा था मुझे जानकारी, लोग ये जानते हैं कि लोग कलकत्ता से गए, लेकिन ये लोग कम जानते हैं कि इस क्षेत्र में प्रतापगढ़ डिपो था। जो इस क्षेत्र में जो लोग ले जाए गए गिरमिटिया के रूप में, उनको इकट्ठा जो डिपो बनता था यहाँ से क्षेत्र से, वो उनको पहले ले जाया जाता था फैजाबाद में रखते थे। क्योंकि एक कारण और बताएं आपको, मुझे थोड़ा नाम भूलना, मैंने पेपर पढ़ा था, गंगा और घाघरा, जो घाघरा है वही सरयू है, तो जो उसमें नदियों से बहुत आवागमन होता था, उसमें रेल मार्ग या सड़कें इतना विकसित नहीं थी, उसमें जो जहां पे नदी के किनारे होते थे जो विस्थापन होता था वो नावों से होता था। तो डिपो फैजाबाद, चूंकि नदी आपके यहाँ पर ये घाघरा बहती थी, सरयू बहती थी, तो सरयू से कलकत्ता, क्योंकि जब मैंने अभी अमेठी जनपद की एक स्वतंत्रता संग्राम किताब की, तो मैंने पाया कि यहाँ से लेकर कलकत्ता तक का पूरा एक बहुत विकसित जलमार्ग था। ये जब सरयू से बहुत विकसित रूप से उसमें पे ना, चूंकि ये तो अंग्रेजों को जब मल्लाहों ने अपना स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई हुई और वहां पर उनको दिक्कतें होने लगी अंग्रेजों, तब उन्होंने जाकर सड़क मार्ग और रेल मार्ग विकसित किया। पहले तो नावों से ही पूरा यहाँ पर आवागमन होता था। तो इस प्रकार से बहुत तमाम उदाहरण जो मैंने आपको बताए। अब जैसे इसमें अगर हम बात करें, जो मैंने लोग आए यहाँ पर, सुनीता नारायण न्यूजीलैंड में रहती हैं, वह मूलतः मेरे बगल जनपद प्रतापगढ़ के रहने वाली हैं, मतलब उनके पूर्वज है। इसी प्रकार से बहुत सारे मुझे अच्छा, एक ना अवध में जो क्रांति जारी, उसमें एक अभी क्या हुआ कि कुछ वर्ष पूर्व एक मुझे समाचार दैनिक जागरण में पढ़ने को मिला कि एक परिवार मॉरिशस से आया हुआ है। मैं संयोग में गांव आया हुआ था, तो मैं अखबार के संवाददाता को ढूंढते ढूंढते उस गांव का पहुंचा जहां पर वो जहां से लोग आए थे सुल्तानपुर में। तो पता ये चला कि इनका नाम है बिंदाचरण है। इनके परिवार की क्या कहानी थी कि इन्होंने सुल्तानपुर के तिकोनिया पार्क है, लोग जानते हैं, यहाँ पर रहने वाले हैं, आजादी की लड़ाई में उन्होंने वहां पर झंडा फहराया। तो अंग्रेजों ने उनको पकड़कर काला पानी कर दिया। तो वो काला, यहाँ से सुल्तानपुर से पहले सजा हुई काला पानी थी, और काला पानी से फिर उनको भेजा गया गिरमिटिया मजदूर रूप में मॉरिशस। तो इस प्रकार पहले एक परिवार मिला, फिर मॉरिशस का दूसरा परिवार मिला। तो इस क्षेत्र के जैसे विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना अजामिल माता बदल ने की थी। माता बदल जी को अगर जानते हो, अब दुनिया में
वह मूल रूप से रायबरेली के रहने वाले थे। इसी प्रकार से आपके फिजी में, अच्छा एक और मजेदार बात, अभी जब करने लगे तो आप लोगों ने अभी आप जैसे सुनक जी का नाम सुनते हैं या शिव सागर राम गुलाम को ज्यादा नाम अपने इलाके में प्रसिद्ध, पटना में उनकी मूर्ति लगाई गई, लेकिन इस क्षेत्र में जो गिरमिटियाओं में सबसे पहले जो पूरे भारत के बाहर प्रधानमंत्री हुए, जो सबसे पहले वो थे छेदी जगन। छेदी जगन थे बस्ती के क्षेत्र के, लेकिन उनका पहले कुछ लोगों ने प्रयास किया था मायावती जी के शासन में कि उनकी लखनऊ में मूर्ति लगनी चाहिए, क्योंकि वो अवध के थे और गिरमिटियाओं में डायस्पोरा में वो पहला ऐसा नाम था जो जाकर भारत से बाहर प्रधानमंत्री बना। उनका नाम मुझे लगता है, मैं बहुत लोगों से पूछता हूँ तो कोई बता नहीं पाता कि छेदी जगन थे। शिव सागर राम गुलाम का पटना में लगभग लोग जानते हैं। यहीं पे घटना और घटी, जब जिस कारण मेरा इस विषय पर ध्यान गया, वो विषय यह था कि यहाँ बगल में अमेठी में ठकुराइन का पूर्वा गांव है, अमेठी जनपद में। तो जो आपके गयाना के उपराष्ट्रपति हुए अपने, एक मिनट उनका नाम ये भरत जगदेव अपने गांव आए यहाँ पर। तो क्या हुआ, कुछ दिन पूर्व मित्र हमारे कुछ लोग गयाना गए थे, गयाना में उन्होंने भोजपुरी की एक संस्था बनाई, तो उन्होंने बताया कि भोजपुरी से आए थे क्षेत्र से और उन्होंने उनको अध्यक्ष बनाया। लेकिन उसके बाद जब वो ठकुराइन का पूर्वा आए वो, तो एकदम वो चीज अवधि का क्षेत्र, तो ये लखनऊ के बगल अमेठी तो अवधि का क्षेत्र है। तो तब इन विषयों पे और मेरा बल आने लगा कि इस क्षेत्र से इतने लोग गए हैं जिनके बारे में बात ही नहीं हुई। पंडित कमला प्रसाद मिश्र जो जिनको राष्ट्रकवि कहा जाता है, वो अयोध्या के। सत्येंद्र नंदन जो इसमें जो ऑस्ट्रेलिया में शायद, वो सुल्तानपुर के। फिजी के मंत्री विवेकानंद शर्मा वो सुल्तानपुर के। तो ये पूरा ऐसा बहुत, आपके ट्रिनिडाड से एक चक्री पीन आई वो रायबरेली की। तो इस प्रकार का एक बहुत बड़ा डायस्पोरा जो है वो हमारे यहाँ से गया है। मैं चूंकि बात लंबी ना हो, मैं सबको शॉर्ट करते हुए मैं आपको कुछ रचनाएं जो हैं, मैं उनके संदर्भ से भाषा का क्या स्वरूप बना, मैं आपको कजरी पहले मैं ये कजरी मुझे सूरी नाम से प्राप्त हुई है। ये कजरी जो है, जब मैं कजरी की किताब कर रहा था मुझे सूरी नाम से मिली। इस कजरी की आप भाषा देखिएगा, अभी कैसे भाषा जो लोग हम लोग गांव में आज भी प्रयोग करते हैं शब्द, ये पता नहीं कितने वर्ष पहले रची गई, इसका रचयिता कौन नहीं पता, ये सूरी नाम से रची गई है। आए सरदार काम भय भारी, किलबिल करे दरोगा, सांझ का ठोके केवाड़ी, नींद के मारे व्याकुल हो गए, दैबे हजारन गारी, सरदार आए सरदार काम भय भारी। हाथ में अपने कनक कुदाली, बगल में कटनी दाबे, हे रामा बगल में कटनी दाबे, आगे आगे चले दरोगा, पीछे से नर नारी, आए सरदार काम भय भारी। निहुरे निहुरे घास कटावे। अब निहुरे निहुरे शब्द जो है वो बिल्कुल ठेठ हम लोगों के गांव में प्रयोग होता है। निहुरे निहुरे घास कटावे, काटी ना जाए कटारी, आंगन ऐसे चिक्कन मांगे, आंगन ऐसे चिक्कन मांगे, गुरु कहत है ये भारी, आए सरदार काम भय भारी। 4 महीना काम करावे, 6वें देत उधारी, कहीं कबीर सुन भई साधो, दास केवल हारी, आए सरदार काम भय भारी। सुनो सिया रामचंद्र की जय। ये कजरी हमको सूरी नाम से प्राप्त हुई है, सुनीता नारायण जी के माध्यम से। इसी प्रकार जो है, और अभी मैं उदाहरण पूरी को इसको मैं संक्षेप में करता हुआ मैं आगे बढ़ता हूं। सूरी नाम में मुंशी रहमान खान हुए, वो यहीं बगल से आपके जो है हमीरपुर से, लखनऊ के बगल हमीरपुर जिला में गए थे। अब उनको चूंकि वो पढ़े लिखे थे, बाकी लोग पढ़े लिखे नहीं थे, वो तुलसीदास का इस संस्कृति के उनके इतना प्रभाव था, उन्होंने हिंदुओं के लिए अलग लिखा और मुसलमानों के लिए उन्होंने अलग लिखा। इनकी 2-2 पंक्तियां में जो उन्होंने मुसलमानों के लिए लिखा, आदि अंत प्रभु का नहीं, नहीं कोई सिरजनहार, मात्र प्रभु के नहीं, नहीं कोई पालनहार, जो कही नूर रसूल का, नहीं रचत रहमान, तो कुर्द रब आपनी प्रगट करत ना जहान, नूर की उत्पत्ति चसबई है रब की शान। और इसी तरह हिंदुओं को लिखा, निराकार पग को नमो, धरऊं चरण तलसीस, हाथ जोड़ विनती करूं कृपा करूं जगदीश, अंतर्यामी प्रभु आय, जानत मम उर्बात, सिद्ध करूं मम कामना करूं, दूर करूं उत्पात। तो ये जो भाषा शैली है उन्होंने रामचरितमानस से जो अवधि की है उससे प्रेरित होकर उन्होंने यह रची, जिसका कि अवधि का इतना, क्योंकि वो यहीं से गए थे और रामलीला के रानी जी बहुत शौकीन थे, वो रामलीला के लिए वो देखने के लिए उनका गठिया पकड़े गए। और मित्रों, जैसे मॉरिशस में कहा जाता है कि भोजपुरी का बड़ा प्रभाव है, मैं भी मॉरिशस 14 बार गया हूँ।
अब देखिए मॉरिशस की बात आई तो मैं आपको एक बात जरा और इसमें, अभी वहां पर कल हमारे एक मित्र बाबा सहिता जी का नाम, हमारे बहुत अच्छे सम्मानित मित्र हैं, उनसे लेकिन मैं उनसे कह चुका हूँ, भोजपुरी के नाम पर गीत गवई की किताब बनी है, एक प्रोजेक्ट है जिसको कि यूनेस्को से उन लोगों ने मान्यता प्राप्त की है। संयोग से वो भारत आई थी, उनकी पूरी टीम भारत आई थी। मैंने उस पूरी गीत गवई के जितने भी गीत हैं मैंने उनको गवाकर उन लोगों से पूरी, मेरे पास 1-1.5 घंटे का जितना है उनका रिकॉर्डिंग है मेरे पास, वह 75% अवध में खेले रघुवीरा, अभी कहाँ भोजपुरी है हमारे अवध, लेकिन इस प्रकार के जितने भी संस्कार गीत हैं अवध के, वह भोजपुरी के नाम से यूनेस्को तक में वो रजिस्टर्ड है। अब उसमें क्या है, कोई अवधि वाला कहते नहीं है, तो जो चल रहा है वो चल रहा है। तो इस प्रकार से जो लिखा जा रहा है, मुझे लगता है वर्तमान समय में उसमें बहुत सुधार की, करेक्शन की आवश्यकता है। अब देखिए वहां की भाषा है, ये कविता मॉरिशस की है, जंगल काट कियो मैदाना खेत बनाए सहित सिवाना उपल बटोर सजाए सीमा खाकर दाल भागो पीमा। अब इस भाषा की शैली देखिए आप जो है, अब इसमें सीमा का रास्ता है, पीमा का मिर्ची प्रयोग है वहां पे। तो मैं इस पूरे को मैं छोटा जा रहा हूँ बीच बीच में, समय मुझे भी पता है बहुत हो रहा है। मैं अगला उदाहरण दे देता हूँ डॉक्टर कुरान का, प्रोफेसर सुरमनी का। उनकी भाषा देखिए, कामनी तिरछा आखिस के बोलिस चोट्टा हमार दिल धक से होगा कुछ बोलत ना बना घूरा घूरा करत हो हम ना घूरित खाली निहारित कामनी सोचे हुई कितना ढीठ हुई गवा फिजी लाल घूरो फिजी लाल हम कुछ ना बोली काहे अच्छा लगे जब तुम घूरत हो। अब ये जो भाषा है, मैं इस तरह के मैं सब छोड़ता हूँ, नहीं बहुत समय भी बीत जाएगा, बहुत लंबा है ये। मैं आपको कुछ और उदाहरण देके मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा केवल। अब एक मैं उदाहरण दे देता हूँ आपको, फिजी माँ, ये लगभग 1034 पेज की किताब है, उपन्यास है। इसके कुछ पन्नों से मैं आपको ये देता हूँ मैं कि क्या भाषा क्या है। एक एक लाइन पढ़ रहा हूं खाली। जय राम, जय बजरंगबली, जय मर्यादा पुरुषोत्तम, रामचंद्र रामायण महारानी की जय। अब रामायण महारानी केवल फिजी में ही कहा जाता है। इसकी भी एक मैं 2 मिनट कहानी बता दूं कि जब विक्टोरिया जब वहां पर गई तो सब लोगों का ये था कि उनकी जय बोलिए, अंग्रेजी महारानी की जय। उन लोगों ने प्रतिवाद में कहा कि हम अंग्रेजों की महारानी की जय नहीं कहेंगे, हम जय कहेंगे अपनी रामायण महारानी की। तो उन लोगों ने रामायण महारानी की जय गढ़ी और उन्होंने आज तक जो रामायण महारानी की जय आप सुनते हैं वो आप फिजी में सुनते हैं। ये भी हमारा एक सांस्कृतिक प्रभाव है वहां पर। तो आगे भाषा, राम फल तौलिया से गटाई पोछिस। अब गटाई पोछिस, हाथ जोड़ के सबन का नमस्कार करिस। आगे छोड़ रहा हूं, आगे एक लाइन देखिए, तोहार बड़की बहनी हमें बहुत पसंद आई, हमार कोई लड़का हो तो पतोहिया बनाए ले। अब पतोहिया शब्द जो है वो दिल्ली जैसे महानगरों में शब्द नहीं प्रयोग, बहुत लोग कहने लगे यहाँ मानक हिंदी, लेकिन पतोहिया बनाए ले। काकी के मुंह में पंजीरी लगा, हम बिंदा का कोचा, बिंदा का कोचा होता, जैसे हम लोग यहाँ बोल रहे कोचा शब्द जो पेट का वही शब्द है ये। इस प्रकार जो है तमाम शब्द ऐसे है। एक आगे, रामचरित मानस बिना हम फिजी वासी सब अनाथ हैं, कटिया धीरे से फुसफुसाइस बिंदा के कान में। अब फुसफुसाइस आगे बढ़ो, ठीक है तिलकधारी, खाली देखना बहुत लंबा चौड़ा नहीं हाके लगना। तो ये बहुत लंबा है, बीच में और मैं इसमें अंत में, बाकी नहीं बहुत समय बीत जाएगा। एक मैं आपको अभी मुझे एक वो मुझे मतलब सुनीता जी की दादी फिजी गई थी सुनिए, तो उन्होंने अपने उनकी हाथ लिखित मुझे कुछ ये वो सांस्कृतिक उन्होंने जो संस्कार गीत थे ये उस समय के उनके हाथ के लिखे हुए मुझे भेजे हैं। इसमें मैं केवल 1-2 लाइन पढ़ दे रहा हूँ। कन्नौज कन्नौज जिन करो बाबा, कन्नौजवा है बड़ी दूर, बड़े वही कन्नौजिया दहेज मांगे और तोरे बूते दिलो न जाए, समधी जो मांगे बाबा गिदुली के फुलवा। इस तरह बहुत लंबा है। तो मित्रों मैं केवल ये कह रहा था कि भाषा के रूप में हमें अवधि
जो ये क्षेत्र छूटा हुआ है, मुझे लगता है इनकी बात नहीं होती है। मुझे लगता है सांस्कृतिक प्रभाव के रूप में हमारी यहाँ पे से मूड पिराता है, नोट पिराता है, सोहारी, सेहदा, ये सारी शब्दावली ट्रिनिडाद में मैंने वहां पर फैजाबाद स्ट्रीट देखा मुझे भी इन तमाम देशों में जाने का मौका मिला है। तो मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि इस तमाम बड़े महत्वपूर्ण, जब हम आप भोजपुरी डायस्पोरा की बात करते हैं, कल मैं मिश्रा जी की स्लाइड देख रहा था, हम बंगाली की बात करते हैं, हम गुजराती की बात करते हैं, भाषाई रूप से हम पंजाबी, गुजराती, हम तमिल की बात करते हैं, जबकि एक बहुत बड़ा डायस्पोरा अवध से गया था। इसलिए हम लोगों को अवधी डायस्पोरा की बात करनी चाहिए और इस पे और भी बातें होनी चाहिए, खोज होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया। Thank you, sir, for an enlightening and thought-provoking session. After this insightful session, the participants who are presenting their paper today are requested to move to the Department of English PG block for the academic session. I now request all our distinguished guests to have a tea break. Thank you. I will now request the chairperson to share his insights. आदरणीय प्रोफेसर उपाध्याय, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर, इसमें मेरी भी रुचि है, इतनी बड़ी गोष्ठी आयोजन का प्रयत्न किया। गोष्ठी बड़ी सफल रही, दूर दूर से लोग आए, जिस सुनने का उनको अवसर मिला। इसका सारा श्रेय आपको है। आपके श्रम, आपकी सूझबूझ, आपकी निष्ठा में प्रशंसा करता हूं। आज के जितने वक्ता थे, उसमें दो तरह के अभिव्यक्त विचार थे, संवेदना परक भी थे, विद्वत्ता परक भी थे। वे सब बहुत अच्छे थे। उन्होंने मन की बातें कही, मुझे अच्छा लगा अपनी बातों को कह सके। राकेश पंडित जो है, उनका डायस्पोरा से बहुत पुराना संबंध। प्रवासी संसार उनकी जो पत्रिका है, इस दिशा में पहला प्रयत्न है। उन्होंने प्रवासी संसार के माध्यम से प्रवासी जीवन के अध्ययन का सूत्रपात किया। और आज जो उनका लेख था, वो आज के जो सही परिप्रेक्ष्य में विषय को ले जाने का प्रयत्न था। ऐसे खुद लेखों की और आवश्यकता। तो हमसे निवेदन है, इस लेख को जल्दी प्रकाशित करें, जिससे हम उसका उपयोग करें। मित्रों, इतनी गोष्ठी में लोग उपस्थित हैं, उनमें सबसे वृद्ध मैं, इसलिए मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। अगर सुझाव ठीक न लगे, मुझे क्षमा करेंगे, लेकिन मैं अध्यापक हूं। 50 वर्ष में दिल्ली में अध्यापन किया। मेरा दायित्व है कि मैं सही सही बात कहूँ आपसे। जो मेरे विद्यार्थी हैं देश में विदेश में, वो ध्यान रखने में कह क्या रहा है, मेरी आलोचना करते हैं, मुझे राह दिखाते हैं। मेरे सहयोगी प्रोफेसर वाई.पी. सिंह, इतने सीनियर आदमी यहाँ हैं, ये बड़े पुराने हैं, मुझे बताते रहते हैं मुझे क्या करना चाहिए। ये प्रसन्नता है आज यहाँ वो उपस्थित है। मित्रों, उपाध्याय जी हैं, आप हिंदी बोलते हैं, अच्छा ठीक है। आपको वही लोग समझता है। मैं बोलना
पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि डायस्पोरा का जो विषय है वो अंतर अनुशासनात्मक है। वो कई विषयों से जुड़ा हुआ है। उससे जुड़ा हुआ है साहित्य, उससे जुड़ा हुआ है भाषा विज्ञान, उससे जुड़ा हुआ है समाजशास्त्र, इतिहास, राजनीति। हम उसको केवल साहित्य और भाषा तक सीमित न रखें। सब लोगों की उसमें बराबर प्रतिभागिता होगी तभी उसको बल मिलेगा। दूसरी बात, जहां इसका संबंध अंतर अनुशासनात्मक है वहीं इसका संबंध बहुभाषाओं से भी है। भारत में जितनी भाषाएं बोली जाती हैं सबका अपना डायस्पोरा है। मैंने देखा है, मेरा आधा जीवन इन देशों में ही दिया। मैं निवेदन करना चाहता हूँ उपाध्याय जी से, बहुत दूरदर्शी आदमी, अभी इतने लोग यहाँ बैठे हुए। अगर ये सारे अनुशासनात्मक विभागों के लोग यहाँ होते और सारी भाषाओं के लोग भी यहाँ होते, हिंदी के लोगों के साथ जुड़कर ये समाज होता, तो आज इसमें जगह नहीं होती बैठने की। गोष्ठी की सार्थकता श्रोताओं से होती और उपाध्याय जी के लिए कठिन काम भी नहीं। मैं सोचता हूँ कि आगे जब मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में आऊँगा और डायस्पोरा पे गोष्ठी होगी तो सारे विभाग के लोग पर विचार करेंगे, सारी भाषाओं के लोग विचार करेंगे। डायस्पोरा संबंध सबसे है और विशेष रूप से हिंदी से है, क्योंकि हिंदी सबको जोड़ने वाली विश्व है। मुझे याद है प्रवासी की आत्मकथा में क्या लिखते हैं, दक्षिण अफ्रीका में ज्यादातर लोग जो आए थे वहां पर वो तमिल भाषी थे, तेलुगु भाषी थे, कन्नड़ भाषी थे, मलयालम भाषी थे और थोड़े से हिंदी भाषी थे। लेकिन उन दक्षिण की भाषाओं में पारस्परिक बोधगम्यता नहीं थी। हिंदी इसीलिए पारस्परिक बोधगम्यता के कारण और सरलता के कारण वासियों की संपर्क भाषा। मैं अधिक बात न कह करके आपके सामने दो कविताएं होती। वो कविताएं क्या हैं? वो आपको उनकी संवेदनात्मक गुण को दिखाने वाली से पढ़ना। जो बंधु फिजी से आए हैं, तो देखिए उनका उपाध्याय जी जो लोग कह रहे हैं वो अंग्रेजी के लोग कह रहे हैं, वो विमलेश शांति नहीं है हिंदी वाले। अंग्रेजी के लोग अपनी भाषा के लिए क्या कहते हैं कि हम सुने जा रहा। रेजिना नायडू है, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ पैसिफिक में अंग्रेजी की प्रोफेसर। वो लिखती हैं फिजी हिंदी हमार भाषा। कोई से पूछ लो, आई के देख लो, फिजी के लोग हैं कुछ अलग। हमार बात फिजी बात है, बहुत सुंदर बात। हम यही भाषा छोटे से है बोलता, थोड़ा अवधि, थोड़ा भोजपुरी, इंग्लिश भी है, फिजियन मसाला भी है। सब भाषा की मिलावट में बनेगी अलग भाषा। अब यही हमारा वजूद, हमारे पूर्वजों के इतिहास, हम लोगों के पहचान, सबको ही मांगो फिजी हिंदी को उठाओ, इसमें पढ़ाओ, लिखो, गाओ, मजबूत बनाओ, शर्माओ नहीं, गर्व से बोलो फिजी हिंदी हमारे पास। दूसरे सुरनाम के जो राष्ट्रीय कवि हैं भारदेव साहब, ये सब मेरे मित्र भी, मेरे साथ बहुत काम किए। भारदेव साहब लिखते हैं मराठी भाषा, हम तो के का बोली, बोली बोली भाषा बोली, अवधि की भोजपुरी हम तो के का बोली। सरनामी की सरनामी हिंदी, हिंदुस्तानी की सरनामी हिंदुस्तानी हम तो। मानक हिंदी की खड़ी बोली, टूटल भाषा की अली गई, हम तो के का बोली। पर भाषा में एक बात बोली तो से हम में बहुत है प्यार, मराठी भाषा जो है सबसे संवेदनशील विषय। भारत में भी जब 12वीं, 13वीं, 14वीं नंबर को राजभाषा खंड पर संविधान सभा में बहुत गहरी बहस हुई, राजेंद्र प्रसाद ने पहले कहा
ये बहुत संवेदनात्मक प्रश्न, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसलिए इस पर चर्चा होगी। ठीक है, सारे कवियों ने सबने एक बात कही है, भाषा गई, भाषा को बचाओ। उपाध्याय जी व्यक्ति इतनी बड़ी गोष्ठी विद्वानों के साथ एक बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब, आपका नंबर। माननीय श्रद्धानंद जी, नंदन सिंह जी को इमरजेंसी में भी वापस जाना है रॉटरडैम, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि जाने से पहले हमारे अगस्त ऑडियंस को अपना आशीर्वाद देते हुए जाए। सर, जहाँ तक ऑडियंस का विषय है, ये प्रोग्राम लगभग 5-6 महीने पहले फाइनलाइज हो गया था और इस समय यूनिवर्सिटी में परीक्षाएं चल रही हैं, तो सारे स्टूडेंट्स अपनी अपनी परीक्षाओं में व्यस्त हैं। निश्चित रूप से आपका भविष्य में हम जब कार्यक्रम आयोजित करेंगे तो उस समय आपको यह पुराहा हमेशा की तरह भरा हुआ मिलेगा। मंगलम भगवान विष्णु गलम गलत्वजा हरे मंगले मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय मनोहरि। इंशाअल्लाह जो भाषा बोले वो वही वाला से होता है। मेरे भाई असलम भाई जो बैठा हुआ है यहाँ पर, इनको मैं बहुत विशेष छोटे नंबर दे देता हूँ कि हमारे लोग पुस्तक छापने में इनका सहयोग। He was a great man to do a job for us, and he is doing now because the delegation is going for the seats. उनका था ये बात मेरे को मौका नहीं मिला। मैं 3 चीज के लिए आया था प्रोफेसर जी। एक तो आके वो मेरे को आपका मौका दिया है कि मेरे को प्रेसिडेंशियल बोली बोलने के लिए। मैंने कहा मैं क्या था, बस खुला है यार, कुछ बहुत तो वो तो हो गया। दूसरा ये था रिसोल्यूशन। भाई सतीश जी, आप तो जानते हैं जो रेजोल्यूशन प्रेजेंट हुआ है वो आपके जरिए से, हे भगवान अब हम लोग उनको दुनिया भर में छापेंगे और it will become against humanity. It was violence, the total endangered system. तो न खाली भारत में, दुनिया भर में जहाँ पर हमारे गिरमिटिया जाके बसे हुए, ये रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन पास कर देगा। मेरे पास लॉयर है, सतीश भी जानता है, हम लोग पूरा आपके वो मिलेगा कि लखनऊ वहाँ इंग्लैंड में ग्लासगो यूनिवर्सिटी का स्लेवरी के लिए हिंदू हिंदुस्तानियों के लिए आपके नाम चलेगा। इसके लिए ताली। वो तो बना, दूसरा वो तो बना हम लोगों ने पुस्तक पेश करने वाला। कलीम भाई, असलम दोनों को मिला देता हूँ। सतीश जी, आपके मैं बुला रहा हूँ, आप यहाँ आइए। और वो बहन जो सुनीति जी, मैं आज जा रहा हूँ। कल मैंने यहाँ पे मेरे को पुरस्कार मिला, मेरा आँखी से आंसू चुआ। क्यों चुआ? अपने पुरखों के मिलने के लिए मैं आया हूँ, वही अरमान लेकर के आया था। मैं न पाया, आप जाकर के खोजिए और आप सहयोग दो कि हम दोनों जो 50 मिलियन यहाँ पर बसे हुए relatives of the Girmitiyas are living here, 50 millions, उनको and the 10 million 10 million जो बाहर है, हम लोगों ने उसके एक के साथ में बताया है, रामा सेठू बना दिया जाए कि हम गाते रहे रामा रामा रटते रटते
बीते मोर उमारिया, ऐसा नहीं गाना। अरे भाई जो हम पे अब छोड़ो बात प्लीज, समय कम है, मैं जा रहा हूँ। दुनिया में दो काम करना है हम लोगों के, एक समाज सेवा, एक परिवार सेवा। ये दोनों के बैलेंस करने, टू बैलेंस दिस टू द फैमिली एंड द सोसाइटी इज अ ग्रेट थिंग। तो कल रात्रि में जो मैं आने वाले प्रयास कर रहे हैं, तो मैं सर्वप्रथम सुनीति आ जाइए, कौन मानिए सुनीति जी और सतीश भट्ट जी, हम लोगों ने वो जितने गिरमिटिया वाला है सब कोई वो गिरमिटिया वाले डेलीगेशन ऑफ गिरमिटिया त्रिदार के हो जाके आ जाइए। देखिए ये अच्छे सब पुरस्कार अच्छे समथिंग फ्रॉम द बिग सिटी रॉटरडैम, वहीं पर मैं रहता, तो मैंने कहा take a souvenir from Holland. No, because Rotterdam is my city. I have built that 50 years ago. मैंने कहा प्रोफेसर जी, यहाँ पे सब कुछ अपना अपना ऊर्जा लगाते, मैं आपको अपने सभी की ओर से जो गिरमिटिया all came from abroad here, उन्हीं के नाम से ये मैं तो है रॉटरडैम, रॉटरडैम is a word. तो मैं बड़ी बनाते रहिए फिजिकली और फिजिकली, तो मिलन को होना है। थैंक यू जी। सिस्टम नॉट, तो यही काम हम, यही बधाई मैं दे करके आपको आगे बात बताऊँ। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै। जय माता की, जय माता दी। The participants who are presenting their paper today are requested to move to the Department of English, PG block.